Most of the times when you actually go for the sectoral fund, they have gone down, like power. I had actually invested a long back in a power fund. At that point of time, it actually got half of it. So I wanted to ask, but as mutual fund industry people, you still come up with sectoral funds, and when you guys were asked what would you invest in, you said a multi-asset and things like that, right? So why would a sectoral fund? And we also had a theme here about almost six wheelers stuff. So see, I did not say that do not invest in sector funds. There are two, three rules. Two, three things which I would keep in mind. दो पॉइंट शायद इनकम्प्लीट रहेगा. बेसिक पॉइंट ये है कि राइस की जगह पे अचार, अचार की जगह पे राइस नहीं होना चाहिए. अचार की जगह पे अचार हो सकता है, उसका प्रॉब्लम नहीं है. So it's not that you should not invest in sectors. But see, let's say for example, if I invest in a, let us say, like right, I mean we are very bullish on defense. I think it will do well. I'm just giving an example. If I say that I'm investing in a fund which is broadly investing in industrials and manufacturing companies, versus I say that I will invest only in the Indian defense sector. But understand, one is a theme, one is a sector, right? If I say that I will invest in capital market companies, or I say that I will invest in banking and financial services, so one is a subset of it. So generally speaking, what happens is that there is a difference between a sector and a theme. सेक्टर्स के जो साइकिल्स होते हैं वो थोड़े लंबे हो सकते हैं. इन अ थीम यू कैन स्टिल गेट कुशन. सो दैट इज वन डायमेंशन टू थिंक अबाउट. सेकंड थिंग इज दैट whenever you invest in a sector or a theme, it is better to invest after it has not performed. That is very very important. जनरली लोगों के जहन में कब आता है जब ऑलरेडी वो बढ़िया कर चुका है. एक्चुअली वहां देखना चाहिए जहां कोई नहीं देख रहा है. अगर देखिए मोर और लेस तीनों लोगों को हम पूछेंगे ना, तीनों को, तो अभी करने का 6 महीने बाद करने का उसका जवाब नहीं है. बट हम तीनों आपको बोलेंगे कि आईटी और डिजिटल का जो स्पेस है वो अभी करंटली इट इज काउंटर सिक्लिकल, करंटली इट इज कॉन्ट्रा. तो यू शुड इन्वेस्ट वन not in a very narrow space or a deeply cyclical space. You should try to look for something slightly more sustainable and broad-based. Secondly, you should always invest counter to the cycle. but जो खराब किया है फिर उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे. जो बहुत चल गया है उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो यू विल गेट स्टक. और तीसरा चीज तो मैंने आपको बोला, इट कैन नॉट बी अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो बिकॉज इट विल रियली हर्ट इफ इट डजंट डू वेल. दैट इज द थिंग्स टू कीप इन माइंड.